इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मानसिक शांति के साथ साथ एनपीएस जीवन में संतुष्टि भी लाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के साथ हम हाजिर हैं। रोज की तरह आज भी हम शेयर बाजार, कारोबार और व्यापार जगत से जुड़ी खबरें आप तक लाएंगे। हम प्रमुख खबरों पर चर्चा भी करेंगे और इन पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Benchmark stock market indices tank over 1%. Sensex plunges 736 points. Nifty slides below the 22,000 mark. Japan brings an era of negative interest rates to an end with the first hike in 17 years. And in the global oil market intraday trade, Brent crude was trading at $86.81 per barrel. घरेलू शेयर बाजारों में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 736 अंक लुढ़का, निफ्टी 22,000 के आंकड़े के नीचे चला गया। जापान में नकारात्मक ब्याज दरों का दौर खत्म हुआ। 17 वर्षों के बाद बढ़ोतरी का ऐलान हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में दिन के कारोबार के दौरान ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल का मूल्य $86.81 प्रति बैरल पर चल रहा था। और आज की पहली खबर, बंबई शेयर बाजार के सूचकांक में शामिल बड़ी कंपनियों के शेयरों ने आज बाजार को 1% से अधिक नीचे धकेल दिया। एशिया के कुछ बाजारों में निराशा का असर भी घरेलू बाजार के निवेशकों पर पड़ा। बैंक ऑफ जापान ने 17 वर्षों के बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की, जिसका शेयर बाजारों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। अमेरिकी फेड की कल होने वाली बैठक के संभावित नतीजों को लेकर भी निवेशकों ने सतर्कता दिखाई। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 736 अंक यानी 1.10% की गिरावट के साथ 72,012 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 238 अंक यानी 1.08% गिरकर 21,817 अंकों पर आ गया। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में आईटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी टीसीएस में 4% की गिरावट दिखाई दी। नेस्ले इंडिया, इंडसइंड बैंक और विप्रो में 3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर बजाज फाइनेंस 1% से अधिक बढ़ा। कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में भी तेजी दिखाई दी। Benchmark stock market indices plunged over 1% today, dragged by index heavyweight stocks. Negative sentiments in the few Asian markets after the Bank of Japan's decision to hike interest rates after 17 years also dampened investor sentiment in the domestic market. Investors also remain cautious in anticipation of tomorrow's outcome from the US Fed meeting. The 30-share Sensex plunged 736 points, 1.01% to close at 72,012. NSE Nifty declined 238 points, 1.08% to settle at 21,817. Among Sensex companies, IT major TCS cracked 4%. Nestle India, IndusInd Bank and Wipro declined over 3%. On the other hand, Bajaj Finance rose 1%. Kotak Mahindra Bank and ICICI Bank were among other gainers. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index declined 1.36%, while the Small Cap Index slipped 1.04%. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange,
The information technology sector fell 2.66%, tech index declined 2.36%, and FMCG sector slipped 2.11%. और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए का स्तर 83 रुपए 4 पैसे प्रति डॉलर पर दर्ज हुआ। दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 104.04 पर था। सुषमा जी, जैसा कि हम बाज़ार का हाल देख रहे हैं कि घरेलू बाज़ार का कि लगातार उस पर एक विपरीत असर दिखाई दे रहा है और आज बहुत काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से बाज़ार नीचे आया, तो आप इस गिरावट को किस तरह से एनालाइज करती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारे देश के सबसे बड़े चुनाव हैं 5 साल के बाद आने वाले हैं 2 महीने में, और 2 महीने में नहीं 1 महीने में, और ये इसका असर ज़रूर मार्केट के ऊपर है। थोड़ी सी जो नर्वसनेस मार्केट में उसको मेरे ख्याल में दिखाई देगी जब तक ये नई सरकार नहीं आ जाती है। तो इसके अलावा भी जो नर्वसनेस की बात मैंने की, इसके अलावा भी कई ठोस वजह हैं। एक तो आपने कहा ही है, जो बैंक ऑफ जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए 17 साल के बाद, तो उससे जो कई सारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा वहाँ से, जापानी खासकर, अपना पैसा यहाँ से वहाँ वापस जापान में ले जाएंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका में जो फेडरल रिज़र्व की जो कमेटी बैठक है वो आज हो रही है और उसका इंतज़ार है कि वहाँ पर क्या होगा। वहाँ सबसे बड़ी बात इस वक्त लोग देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन का दर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, आज आ गया है अभी 3.2%, और लोगों का एक्सपेक्टेशन था शायद 3.1%। तो इससे ये लग रहा है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद जून में जब इंतज़ार था कि कोई एक रेट कट होगी, शायद वो नहीं होगी या बहुत कम होगी। तो इससे थोड़ी सी अगेन, जैसे मैंने कहा, नर्वसनेस मार्केट में आ गई है इसके ऊपर। और बाकी और भी वजह हैं जो पहले भी शायद आपने बात की होगी प्रोग्राम में, जो स्मॉल एंड मिड कैप्स हमारे स्टॉक मार्केट्स में अभी इस वक्त थोड़े से ओवर वैल्यूड हैं। प्रीमियम वैल्यूएशंस की जो बढ़ोतरी हुई है वो उसका भी बबल तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन थोड़े से ओवर वैल्यूड हैं और उससे भी प्रॉफिट बुकिंग इस वक्त हो रही है। और लास्ट मैं ये कह सकती हूँ कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस वक्त अपना पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से, उसका भी असर हुआ है। तो ये बहुत सारी वजह हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि आगे वाले दिनों में अगर हम देखेंगे तो ज़रूर वॉलेटिलिटी रहेगी स्टॉक मार्केट में। Sushma, today's market performance, I think, is quite unique because typically when the Sensex falls by 1% in a bullish market, even though it has been bearish for the last week or so, FIIs or DIIs tend to be the net sellers in the market. But today, DIIs and FIIs were net buyers in the market. We have figures coming in. FIIs, FPI, these are provisional. 1,420 crore rupees net buyers. DIIs, net buyers to the tune of 7,450 crore rupees. So clearly, the sell-off is being seen by some other part of the buyers or sellers in the market. Are they retail investors who are looking to sell in the market right now? What's happened today? Because volumes went up and as you said, the volatility index went up by 1.5%, not by much. But is it a sign for things to come? Yes, well, as you mentioned that it has been a bullish market for quite some time. And only in recent days, suddenly we had a slide some time back. That was also quite dramatic. That was also somewhat of a crash. Today also has been rather dramatic. The fact is, I would really attribute this because other factors are of course there. The issue of the Bank of Japan, the issue of the US. But these are factors which have been there. I would really attribute it more to a kind of nervousness that happens before the elections. And we must remember that elections are something that come once in 5 years.
years. So there does tend to be this kind of volatility. I mean, it's something like before the budget, you would have every year you would have some amount of volatility. But this is a more serious affair in the sense that it's once in 5 years, not annually. So I suspect that in the coming months, in the coming next 2 months at least, we will have these kind of spikes in the market. We're heading for a short break, so please stay tuned on Market Mantra. अपने सुरक्षित भविष्य के साथ साथ वित्तीय स्थिरता के लिए भी एनपीएस पर भरोसा करें। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome back to Market Mantra. We are discussing about market performance with Sushma Ramchandran, our expert on today's program. Sushma, you mentioned about the small cap fund especially, where there is a tendency of overvaluation cited by experts, but we saw a sell-off in the market today as well. IT and tech saw a decline today. What are the real reasons? Is it because just of overvaluation, or there's some other concerns? Well, partly it's overvaluation. Partly, of course, there are specific developments. In the case, for instance, of TCS, which has taken over, there have been some developments in the case of that particular company. And so you have seen the impact on TCS. IT, I would say, is something that is in the long run, if you see, is, you are going to be bullish on it. IT services are booming over the last few years. In fact, overall services exports are booming, and within that, services are the maximum amount. So I would say that this is not something that we are going to see in the long run. This is a short-term measure linked to very specific developments in the IT sector. और सुषमा जी, अगर हम बाज़ार में देखें, और आपने कहा कि पिछले एक हफ्ते से जिस तरह का प्रदर्शन बाज़ार में है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, तो अभी तो 2 महीने से ज़्यादा हमारा चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। तो आपको क्या लग रहा है, ये उथल पुथल अभी बाज़ार में चलती रहेगी? जी बिल्कुल चलती रहेगी, क्योंकि जब भी कोई नई खबर आएगी, और ये जैसे मैंने कहा, आज तो बहुत ठोस खबरें आई हैं, लेकिन जो मार्केट का रिएक्शन है वो जनरली इतना शार्प नहीं होता है। तो ये जो शार्प रिएक्शन मार्केट में है, ये मेरे ख्याल में, क्योंकि जो है देश इस तरफ जा रहा है, चुनाव की तरफ, और आपने कहा 2 महीने हैं, और ये इस वक्त जो चुनाव का वक्त जो है वो थोड़ा लंबा है, और उससे भी मेरे ख्याल में आपको ये देखने को मिलेगा, और कई पॉलिटिकल खबरें भी आएंगी आने वाले दिनों में, उसका भी असर जरूर होगा स्टॉक मार्केट के ऊपर। What is your estimate for tomorrow's stock market performance? It's very difficult to say, because we are going to, see whatever developments happen externally. Whatever factors we have talked about today are largely in the external environment. We've talked about the US Federal Reserve, we've talked about the Bank of Japan, and FIIs. These are all external developments. So I would, I think what we will have to do tomorrow is wait for what happens in the Federal Reserve Committee, and that is likely to have an impact. But I would expect some amount of stability. I don't think we are going to have a bearish run for too long right now. But as I must repeat myself, I would expect volatility over the next 2 months. We're seeing the F&O markets, put contracts being executed quite a bit, where there's an expectation that the Nifty would crack the 22,000 level. So it's likely to come down. At least that is the weekly and the monthly contracts. That's what it's suggesting. So what would you advise investors? I'm sure those who are listening in would like to know from you. Well, right now I would say that since the market overall, if you're looking in the short run of the next 2 months, I would say that you need to be very careful and do not react immediately to developments, because you are going to have spikes and sharp falls in the market, and therefore you should remain steady. There's no need to take hasty decisions. जी, और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाज़ारों का हाल भी जान लेते हैं।
एशिया के प्रमुख बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा। गिरावट दर्ज करने वाले बाजारों में हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.25%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.1% और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.7% नीचे आया। दूसरी ओर जापान के निकेई में 0.66% की बढ़त दर्ज की गई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स भी मामूली रूप से बढ़ा। यूरोपीय बाजारों में दिन के कारोबार के दौरान मिला जुला रुख रहा। ताज़ा समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 0.4% और जर्मनी का डेक्स 0.27% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर लंदन के फुट्जी में 0.16% की गिरावट दिखाई दे रही थी। इसी के साथ जापान से बड़ी खबर आई। बैंक ऑफ जापान ने आज नकारात्मक ब्याज दरों की नीति को अलविदा कह दिया और 17 वर्षों में पहली बार बढ़ोतरी की घोषणा की। बैंक की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ब्याज दरें अब 0 से 0.1% के बीच रखने को प्रोत्साहन मिलेगा। पहले ब्याज दरें नकारात्मक रूप से 0.1% के स्तर पर थी। सुषमा जी, ये बड़ी खबर है और शेयर बाजारों पर इसका काफ़ी असर हमें दिखाई भी दिया। तो ये आप हमारे श्रोताओं को अगर आसान भाषा में ये बता पाएं कि ये ब्याज दरों 17 वर्षों के बाद इतना बड़ा फैसला लिया, और अगर हम भारत के संदर्भ से इस पूरी डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो ब्याज दरें काफ़ी ऊंचे स्तर पर रहती है, तो इसका क्या अर्थ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि जापान एक डेवलप्ड इकोनॉमी है और इंडिया जो है वो इमर्जिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी जो कहते हैं, तो उसमें बहुत अंतर है। हमारी जो इन्फ्लेशन की रेट है, हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो बड़ी खुश है अगर हम 4 और 6% के बीच में हमारी इन्फ्लेशन की दर रहे, लेकिन जापान में इस वक्त 2% है। तो उन्होंने उससे कम भी था पहले, तो उनका ये मानना था। अब हम लोग कहते हैं कि हमारी जो लोग हैं, हमारे कंज्यूमर्स जो हैं, वो अपना पैसा हाँ ज़रूर खर्चा करें, लेकिन कुछ वो बैंक्स में भी डालें, डिपॉजिट करें। लेकिन जापान में क्योंकि इतना स्लो ग्रोथ हो रहा था, तो वो चाह रहे थे कि उनके जो कंज्यूमर्स हैं वो अपना पैसा खर्च करें, वो बैंक्स में ना डालें। अगर आप बैंक में डालते तो उनको फ़ायदा नहीं है, नेगेटिव रेट था। इनफैक्ट वो कहते थे आपको पैसा देना पड़ेगा अपना डिपॉजिट डालने में के लिए बैंक में। तो वो चाहते थे कि कंज्यूमर्स खर्चा करें, जितना खर्चा करेंगे तो फिर वो देश की जो जीडीपी ग्रोथ है वो थोड़ी सी तेज़ रफ्तार से बढ़ेगी। तो ये बहुत अंतर है। Sushma, put things in perspective because our listeners from India would like to know that what has been the bank rate of the Bank of Japan. Yes. It was minus 0.1%, yes. Minus 10 basis points, and now it is between 0 and 0.1%, which yes. is, it has gone up by 10 basis points. Yes. So the stimulus, has it really changed? It seems to be continuing still. And Japan, is it a victim of inflation? Their target is 2%, but they have actually enjoyed deflation, at least the consumers Yes. have, for about 2 decades at least. So where does this place Japan? Are they in a precarious situation as compared to, say, the UK, which has now the inflation is at 4% compared to 10% Yes. last year, and they are in a technical recession as well. Japan is in a technical recession. Technical means that it's just about 10 basis points below. So what do you think is your observation on this? I think to make people understand it, it's easier to compare with India as an emerging economy rather than to compare with other developed economies, because we want them to understand the difference between India and Japan, because we have a completely, as you yourself pointed out, we're in a completely different environment. And as our other colleague pointed out, we are in an environment where inflation, as I said, is, the Reserve Bank is very happy that it is between 4 and 6%. Now, in the US, for instance, right now, the worry is that it is about 3.2%. Whereas in Japan, it is much lower, but they're not getting growth. They're not getting growth. Now, they wanted people to invest funds
And so to make sure that they invest funds, they wanted funds to be cheap. So the cheaper, you pointed out just now, the interest rate on loans was 10% below the negative. It's a negative interest rate. 10 basis points. 10 basis points below the the normal zero. It's very difficult to explain it, but it's a negative interest rate of 10 basis points, and it has now been brought up. But the whole idea, I think we should forget the numbers. The whole idea was that people should have access to cheap money, and therefore they would use that cheap money to invest in the economy, and therefore there would be some growth of investments and infrastructure in the economy. So that was the aim, and that has been the aim for the last 17 years. They have now changed. One of the reasons is that they have had to pay higher wages to their workers, and as a result of that, the companies are feeling the need to be able to get funds at a higher interest rate. So this is something you very rightly said, it's difficult for us in India to understand. They're even different, not just from us, but from the US and UK, as you pointed out. We're heading for a short break. Please stay tuned on Market Mantra. अच्छे रिटर्न के साथ साथ एनपीएस आपका आत्मसम्मान भी सुनिश्चित करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome back to Market Mantra. We're discussing about the market performance, international market performance with Sushma Ramchandran. Your views on Great Britain as well, because Rishi Sunak is the Prime Minister there, and UK is now recovering from high inflation to moderate inflation at 4%. What are the challenges in Britain, because they're also facing a technical recession? See, the UK has gone through the same period and a worse period than as the rest of Europe. And similar to what happened in the United States. But the US has recovered much more quickly. The UK and Europe are still reeling from the effects of the Ukraine war. And what was the impact of the Ukraine war was that you had very high oil and gas prices. And those high oil and gas prices led to a very high inflation. And that in turn, it went up to levels of 8 to 10%. And that in turn led to central banks of the area raising interest rates. So we had a situation where the interest rates were high, inflation was high. It was something, and again, we were comparing with India and Japan. Now with India and Europe, that the same kind of interest rates that India has been seeing as an emerging economy and the same kind of inflation that India had been seeing were seen in the UK and in Europe. It has now been brought down to 4%. So I think its situation is much better. तो सुषमा जी, ऐसी हालत में जैसे बैंक ऑफ जापान की आज घोषणा हुई और आपने इतने अच्छी तरीके से उसको भारत के संदर्भ में भी समझाया, तो कल अमेरिकी फेड की बैठक होने वाली है, उसके संभावित नतीजों को भी को लेकर आज हमने देखा कि इन्वेस्टर्स बहुत ही कॉशियस थे, बहुत सतर्क थे। आपको क्या संभावना लगती है कि फेड क्या करने वाला है कल? देखिए, फेड ने कहा है कि वो इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो चाहते हैं कि इन्फ्लेशन 2% तक आ जाए। अभी 3.2% है, तो अगर 3% तक भी आ जाए तो संभावना ये है कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे। अभी तक जैसे वो जो वरी ये है कि अगर इन्फ्लेशन अभी भी 3, 3.5 या 4% तक पहुंच जाए तो शायद वो अपने जो इंटरेस्ट रेट कट का जो सिलसिला है वो अपना शायद बदल देंगे अपना फैसला।
Moving on to the US stock market. The US stock market ended in positive territory yesterday with technology, consumer goods and telecom company shares leading the rally. However, market gains were limited ahead of the Fed Reserve's two-day monetary policy meeting scheduled for Tuesday and Wednesday. At the closing bell, the Dow Jones Industrial Average advance of 0.2%, the S&P 500 added 0.63%, and the tech-heavy Nasdaq Composite Index grew 0.80%. Sushma, just to continue what you were saying earlier, the US inflation rate has gone up marginally month on month by about 6 basis points only. Yes, very but it's small. improved as compared to last year, which was 6%. It was Correct. double it. But the discount rate, the repo rate as it's called in the US, is 5.5% right now. And if the discount rate is much more than the inflation rate, do you think the markets are expecting that, yes, there would be a rate cut by the Fed Reserve because it's 5.5% and the inflation is 3.2% or 3.15%? Is the market expecting a rate cut, and by how much? No, the market is definitely expecting a rate cut, but they are concerned that the Fed would delay the process of the rate cut in case inflation continues to rise. The market is not just expecting; the market wants a rate cut. So that's one major factor. And you must remember that the Federal Reserve has been very stubborn, you might say, and has resisted all pressures, whether from governments or from corporates, to take this step. So therefore, it's a very independent Federal Reserve, central bank, and we can only wait and see what they're going to do. In more news, the RBI in its monthly bulletin has informed that India's real GDP growth was at a 6-quarter high in the third quarter of 2023-24, powered by strong momentum, robust indirect taxes and lower subsidies. According to the article State of the Economy, co-authored by the RBI Deputy Governor Michael Patra, healthier corporate and bank balance sheets are likely to further stimulate growth in the coming months on the global front. The report said that the global economy is losing steam, with growth slowing in some of the most resilient economies and high-frequency indicators pointing to further leveling in the period ahead. The report also pointed out that repeated incidents of food price rise is proving to be an obstacle in the swifter fall in headline inflation towards a target of 4%. Another article titled Pandemic-Induced Policy Stimulus and Inflation, a cross-country perspective, has said that global inflation would soften initially on economic contraction in 2020 after the onset of the COVID pandemic started rising in 2021 with the easing of COVID time restrictions and reached multi-year highs in 2022 following the Russia-Ukraine conflict. Now moving on to the oil market, oil prices remain mostly unchanged today, hovering near their 4-month highs following a breakout from a period of range-bound trading last week. However, the potential for increased exports from Russia was a factor in the market, particularly in light of the Ukrainian attacks targeting refineries. In intraday trade, Brent crude was trading at $86.83 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $82.77 a barrel when reports last came in. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाले सोने में आज गिरावट दिखाई दी और यह कीमती धातु 43 रुपये गिरकर 65,565 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर थी। मई अनुबंध वाली चांदी 178 रुपये की बढ़त के साथ 75,318 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी। वैश्विक बाजारों में कमोडिटी एक्सचेंज में सोना नुकसान के साथ $2,179.40 प्रति औंस पर था। वहीं चांदी भी सुस्ती के साथ $25.16 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। Sushma, even though we're seeing an uptick in oil prices, but there has been a definite rise in gold prices. Could you tell us why? Well, simply because there's so much geopolitical tensions, and gold tends to be a safe haven asset, and that gold has been going up steadily over the past year. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। सुषमा जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark stock market indices tanks over 1%. Sensex plunges 736 points. Nifty slides below 22,000 mark. Japan brings an era of negative interest rates to an end with the first hike in 17 years. And in the global oil market, intraday trade, Brent crude was trading at $86.81 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
एक आकर्षक निवेश के साथ साथ एनपीएस समानता का भी साधन है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.